Yeah, the topic for this lecture is alkyl halides, a very important functional group of organic chemistry. So first of all, look into this. What is actually alkyl halide? Alkyl halide is generally denoted as Rx, where R stands for any alkyl group and X stands for any halogen, like fluorine, chlorine, bromine, iodine, any halogen. For example, this is ethyl chloride, or IUPAC name chloroethane. Similarly, this is methyl bromide or bromomethane. If we see into these examples, it is quite evident that in alkyl halides, bromine or chlorine or fluorine, any halogen is directly attached to such a carbon which is sp3 hybridized. This is how we define alkyl halides. So in alkyl halides exclusively, halogens are attached to those carbon which are sp3 hybridized or having tetrahydrogeometry. So next is alkyl halides preparations. Preparation of alkyl halides, we divide them into a lot of categories, and the first category is preparing alkyl halides from alcohols. Alcohols are again a hugely important functional group of organic chemistry, and they are denoted as ROH. Whenever we see OH group attached to a carbon chain, we call that functional group as alcohol. How to prepare alkyl halides from alcohols? The very first method is, suppose I'm taking an alcohol, a general reaction, ROH, alcohol. If I react it with any halogen acid like HX, HX can be HCl, HF, HBr, HI, lots of, but we'll see the specification later on. But first of all, see general reaction. ROH plus HX in presence of a catalyst, that is zinc chloride, ZnCl2, will result into a simple reaction, and I get Rx, that is alkyl halide, and H2O. Let's take an example. Suppose C2H5OH, I'm taking ethyl alcohol and making it to react with HCl in the presence of same catalyst, that is ZnCl2. Here I'll get simple substitution reaction. Cl will substitute OH and the result is C2H5Cl, that is alkyl halide, plus water. But this reaction occurs in presence of a catalyst called as ZnCl2. This combination of catalyst, that is HCl plus ZnCl2, is called as Lucas reagent. It is going to be very important for us later on. So Lucas reagent is a reagent which we use for this reaction. Now, if I see other ways to create, to produce alkyl halide, before that, just see some more specifications of this particular method where we are preparing it with alcohol, from alcohol. So if I am taking an example now of CH3, CH, CH3, then OH plus HCl. Here I have chosen secondary alcohol. I am referring to the same method which we have just discussed in previous slide. So here I am taking secondary alcohol. This carbon is secondary carbon. So OH attached to secondary carbon, we term such functional group as secondary alcohol. If I am making this secondary alcohol to react with HCl under similar condition, I get secondary alkyl halide, for example, like this, CH3, CH, CH3 and Cl. Same ZnCl2 I have used over here also. Similarly, if I chose now tertiary alcohol, CH3, C, CH3, CH3 and then OH. This is tertiary alcohol. And if I am choosing tertiary alcohol to react with HCl in combination with ZnCl2, what I get tertiary alkyl halide. So in this way, I'm preparing primary, secondary as well as tertiary alkyl halide by using primary, secondary and tertiary alcohols respectively. If I compare all three alcohols undergoing this reaction, the preference, the reactivity or the ease is tertiary reacts fastest, then secondary and then primary. So here ease of this reaction means alcohol with Lucas reagent resulting into alkyl halide follow this kind of ease.
And the reason for this is, let's discuss first that if I'm choosing primary alkyl halide, primary alcohol CH3, CH2, OH, and then secondary alcohol, we are going to compare what happened in all, which decides the ease of this reaction. This is secondary, and then finally I'm writing over here tertiary alcohol. So this is tertiary alcohol. This is primary, secondary, tertiary. The first case, primary alcohol. What happens is, in this type of reaction, according to mechanism, the very first step is CH2O bond breaks. Means this CO bond is undergoing a cleavage, which results into a carbocation. So in first case, carbocation formed is primary carbocation. In second case, carbocation formed is secondary carbocation. And in third case, carbocation formed is tertiary carbocation. So these three carbocations, if we compare the stability of these three carbocations due to inductive effect of alkyl groups attached to the carbon carrying positive charge, we see that tertiary carbocation is most stable, then secondary carbocation, and least stable is primary carbocation. So in case of tertiary alcohol, this step goes with much ease, as it is resulting in a very stable intermediate, and that is tertiary carbocation. As compared to tertiary, secondary will go a little slow, and then primary will not prefer to go. That's why we need to use ZnCl2 as well as heat. But as we are moving towards tertiary, we simply need to warm the solution, and sometime ZnCl2 can be skipped. So this reaction goes with much ease than this, and then primary one. So I can say reaction tertiary, then secondary, then primary regarding alcohol. So this type of reaction where the bond CH2O, or I can simply say CO bond cleavage is involved, is preferred in tertiary alcohols, then secondary, and then primary. Yes. Next method of preparation of alkyl halides from the same alcohols is, if we are taking alcohol, reacting them with phosphorus trihalides like PCl3 or PBr3. When we react these with alcohol, simple nucleophilic substitution reaction occurs. OH alcoholic group get replaced by this halogen, maybe Cl or Br, and we get RCl or RBr respectively. And the byproduct in such reaction is, we need to remember byproducts also, and that is H3PO3. Now, in this reaction, these trihalides, phosphorus trihalide, phosphorus tribromide or phosphorus trichloride, whatever trihalides, we can prepare them in situ. In situ means within the reaction mixture, means if I'm going to take general example like C2H5OH alcohol with PCl3. But this PCl3, if we need to prepare in situ, what we are going to take now in place of PCl3, because we need to prepare it in situ. In situ means within the reaction mixture. So making it within the reaction mixture, what we are going to do, we are going to take red phosphorus. We are going to take red phosphorus with the halogen. So this red phosphorus with the halogen, for example Cl2 or Br2, they both, either of them we take with red phosphorus in situ. This P plus Cl2 will create PCl3, P plus Br2 will create PBr3, and the result is alkyl halide C2H5Cl or C2H5Br. So this method clearly a very direct nucleophilic substitution reaction. Then coming to other way of preparing alkyl halide from the same category, that is alcohol. In place of these trihalides, we can take pentahalides also, like ROH reacts with
PCl5 to produce the same product, and that is by nucleophilic substitution reaction. A Cl from here goes and replaces this OH group, and we get our Cl once again. So either we choose PCl3 or choose PCl5, what we get our Cl, means alkyl halide. So by these two methods we can also prepare alkyl halides from alcohols. One more way to go, ROH. Alcohol, if they are made to react with SOCl2, again the same nucleophilic substitution reaction, Cl from here goes and replaces this OH. So Cl is going to replace OH, and what I get is RCl plus SO2 plus HCl. This is best method to prepare alkyl halides from alcohols. One of the best method, preferred method. And why so? Because in this method, if we see, both the byproducts which we are getting are gaseous, and gaseous byproducts escaped from the mixture as soon as they form. So there is no fight of isolation or purification of the alkyl halide form, as both the byproducts are gaseous. So this is best preferred method for alkylation, for halogenation of alcohols. So now first category which we were discussing rather now I say, is from alcohols we are making alkyl halide is over. In all these reactions, tertiary alcohol is preferred, then secondary, and then primary alcohol. So preference order will remain the same because it involves the same cleavage, means it involves the same bond cleavage between C and O, as we have discussed in first slide. Now, second category of preparation of alkyl halides, which starts from hydrocarbons. How we can prepare alcohols from hydrocarbons? So hydrocarbons category is going to involve alkane, alkene, alkynes, or benzene, anything which the compounds which consist of only hydrogen and carbon. So in this category we are going to see from hydrocarbons how we are going to prepare alkyl halide, and the very first one in this is from alkanes. Suppose we are having a simplest alkane, that is methane. If I made to react this methane with a halogen in presence of light, maybe sunlight, ultraviolet light, means HNu. HNu is indication of use of light. So methane is reacting with chlorine in presence of light, and the result is methyl chloride. So what happens here? One hydrogen from hydrocarbon like methane is replaced by a halogen. Let's see its various products or some other example under the same category. So just to see that detail, I am taking another example, CH3. It is ethane. HNu means light. We are using sunlight or some other source of light for this reaction. Such reactions which occur in the presence of light are called as photochemical reaction. So it's a photochemical reaction, और इस photochemical reaction में क्या होगा? HNu light की वजह से यहाँ पर free radical create होगा Cl के बीच. दो क्लोरीन के बीच के बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, and this homolytic cleavage will lead to the formation of 2 Cl free radical. और ये Cl free radical जाएगा and it will substitute hydrogen from alkanes, and result is CH3CH2Cl. बट इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है, ये एक चेन रिएक्शन है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते. सो हियर one by one all hydrogens will get substituted and final product is all H replaced by Cl. If I am taking methane with Cl2 in presence of HNu, the final product is CCl4, where all H are substituted by halogen. But if we consider monohalogenation, as we are preparing alkyl halides having mono group, having one halogen only. So if I see monohalogenation only in this reaction,
I'm not going to consider further steps after this. So let's take another example. Butane, CH3, CH2, CH2, CH3. This is something interesting to discuss, that here we have lots of hydrogens to get substituted by Cl. Which one should be preferred? These three and these three hydrogens are exactly similar, so equal probability of substitution. But these two and these two hydrogens are different from these hydrogens. What is the difference? First of all, this hydrogen is attached to secondary carbon and this hydrogen is attached to primary carbon. So all in all, we have two types of hydrogen. All cannot be substituted with equal probability. So which is preferred first if we go for monohalogenation, that is HU and Cl2? और सिर्फ अगर एक ही H substitute होना है तो कौन सा H preferred होगा substitute होना? That is secondary. So primary के बजाय पहले substitution होगा secondary hydrogens का and then primary hydrogens. So here product will be 2-chlorobutane, not 1-chloro. These H will be substituted with less probability. So first priority is second Cl. Cl at second position. So this product is major in this reaction. Yes, minor possibility is there that we can get this also, CH3, CH2, CH2, CH2Cl. Very less possibility, very less chances are there that this H can also be substituted with Cl, but preferred is always secondary hydrogen in place of primary hydrogen. So this one is major product and this one is minor product of this reaction. So in this way, with the help of alkanes, we can produce alkyl halides, and this method is called as halogenation of alkanes in presence of sunlight always. In the same category, that is preparation of alkyl halide with the help of hydrocarbon, we are going to take now case of toluene. This is toluene, benzene ring with a CH3 group attached to it. This toluene is also a hydrocarbon. Now, if we are interested to make halides from this particular hydrocarbon, just take halogen X2, which can be again chlorine or bromine. And no light this time means we are using condition dark. Dark means no light exclusively. And along with that, I am using a catalyst transition element, that is iron. In such type of combination, when we are not using light, what happened when we used light in last case? For example, हमने पहले Cl2 लिया था, उसको हमने H न्यू यानी लाइट दी थी, तो उससे एक ही चीज हो रही थी, and that was Cl का homolytic cleavage results in formation of two free radicals, और ये free radicals जाके H को substitute कर रहे थे. और कौन से H को substitute कर रहे थे? Only those H जो sp3 hybridized कार्बन के साथ अटैच थे, यानी एल्केन्स वाले H जितने भी थे उनको एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर रहे थे. बट यहाँ पे हमने सेम Cl2 सेम X2 लाइट नहीं डार्क में लिया है, तो थिंग्स विल बी क्वाइट डिफरेंट है. रिएक्शन उस तरह से नहीं होगा जैसे हमने पिछले एल्केन्स के केस में देखा था. अब जब हम Cl2 के साथ लाइट नहीं ले रहे, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर फ्री रेडिकल नहीं बनेगा. हमने डार्कनेस लिया है प्लस एक ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के तौर पे लिया है, तो यहाँ पर जो हमने X2 फॉर एग्जांपल हमने Cl2 लिया है, इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा. मींस Cl का बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर एक Cl के पास और दूसरा Cl एज पॉजिटिव जनरेट होगा. ये Cl जो एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, that will further participate in this reaction and this will attack toluene. ये Cl पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल toluene को अटैक करेगा और यहाँ के हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करेगा. कौन से हाइड्रोजन्स को? इन हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा. ये सिर्फ किन हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करेगा? वो हाइड्रोजन जो ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड हैं
जो बेंजीन रिंग का हिस्सा हैं या जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। यानी इफ आई सी टोल्यूइन में 5 ऐसी पोजीशंस हैं हमारे पास जहां पर ऐसे H लगे हुए हैं जो इस Cl पॉजिटिव से अटैक होंगे, और वो 5 पोजीशन है दिस ऑल डॉटेड पोजीशंस आर रिएक्टिव साइट्स। नाउ ये Cl+ एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इन 5 में से किसी भी एक H को सब्स्टिट्यूट करने की टेंडेंसी रखता है। But which position is preferred for attack? This is decided by the group attached here, and that is methyl. Methyl group influence incoming electrophile to attack only at ortho positions and para position. ये 2 positions are ortho and this position is para. इन 3 positions पर लगे हुए हाइड्रोजन are now prone to attack via this electrophile जो इस combination of catalyst से बना. So now this toluene having 2 ortho and 1 para position available, Cl2 with iron goes and perform this reaction. 2 possibilities. One is ortho position का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो एंड अदर इज पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो। तो उन 2 पॉसिबिलिटीज की वजह से सपोज फर्स्ट केस ऑर्थो वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ क्लोरीन से, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमने अभी डिस्कस की पैरा वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ इसी क्लोरीन से। दिस पोजीशन इज पैरा। सो वन प्रोडक्ट इज ऑर्थो, अदर प्रोडक्ट इज पैरा. विच इज preferred, which is major? To judge that, to find out that, let's compare both. In case of ortho substituent, these 2 bulky groups are quite near to each other, which causes huge repulsion, hence unstable. Whereas in para case, 2 bulky groups are just far away from each other, less repulsion, hence this is more stable, this is less stable, so this product is major product. So if we conclude both the cases which we have just discussed, one is if we give Cl2 to alkane in presence of light, we get substitution and result is alkyl halide. But if we take same Cl2 in presence of iron catalyst and no light, we get electrophilic substitution reaction where a electrophile substitutes another electrophile, that is hydrogen. तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे हुए हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करके these 2 possibilities are there, जिसमें मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा. सो मूविंग नेक्स्ट, एक और हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी हमारे पास आती है जिससे हम एल्काइल हैलाइड्स या फंक्शनल ग्रुप हेलोजन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, एंड दैट इज एल्कीन्स. What are alkenes? Obviously, they are unsaturated compounds having at least 1 pi bond. जहाँ भी C double bond C है, एक bond sigma है और एक bond pi है. We all know that. ये pi bond is highly labile, highly reactive, prone to attack by any reagent. So, making use of that, now we'll see what happens if to this simplest alkene which I have drawn over here, suppose these 4 substituents are nothing but hydrogens. So this is ethene. अगर मैं ethene को Br2 simple bromine provide करती हूँ CCl4 में, then what happens is under the attack of this Br2 ये pi bond cleave हो जाएगा, टूट जाएगा, and the result is दोनों कार्बन्स का जब एक pi bond टूट गया तो इन दोनों कार्बन्स की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई, फ्री हो गई. टू सेटिस्फाई दैट Br2 का एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर आके एड ऑन होगा Br. This results in dihalo derivatives of alkanes and that is dihalogen compounds. तो इस तरह के डेरिवेटिव्स में दो हेलोजन एक साथ ऐड हो गए. Such type of reactions are called as addition reaction. When we see 2 compounds are added up forming a 1 compound, then we say such reactions are as addition reactions, and this addition reaction exclusively is called as electrophilic addition reaction. Because this pi bond is nucleophilic center. Nucleophilic center means electron rich place.
and nucleus loving place. On this, electrophile will start attack. That's why such type of addition reactions are called as electrophilic addition reaction. So electrophilic addition reaction से हम यहाँ पर again halides बनते हुए देख रहे हैं, but this reaction is of another importance in lab work, and that is if I need to test any alkene's presence, or I need to give a prelim test to confirm that pi bond is present or unsaturation is present, in that case use Br2. ब्रोमीन हम यूज करते हैं, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है. When we are using brown colored bromine solution to add up to alkene, what happens is that bromine will add up to the alkene just like above reaction we have seen. In that process, this brown color of bromine get decolorizes. ये ब्राउन कलर का डीकलराइज हो जाना रिएक्शन के बाद विल शो दैट देयर वाज सर्टेनली डबल बॉन्ड और अनसैचुरेशन इन द reagent taken in test tube. So this is a prelim test for the presence of double bond in a group. So we are going to use it as a test also. Now coming to another reaction of the same category, that the category where we are seeing alkyl halides preparation by using hydrocarbons, and we are presently discussing alkenes. What will happen if I use a alkene and a reagent which is not symmetrical like Br2? Br2 reagent is symmetrical, 2Br, similar atoms are combined, so this is a symmetrical case. But if I am not taking a symmetrical case, rather I am taking an unsymmetrical case where HBr means one hydrogen and one bromine are bonded together, this is unsymmetrical reagent. If we consider this bond to be cleaved, it will produce a electrophile and a nucleophile which are different from each other. That's why it is an unsymmetrical reagent. But the alkene we are using here is quite symmetrical, means डबल बॉन्ड के पास जो दो कार्बन्स हैं दे बोथ आर आइडेंटिकल, एकदम एक जैसे हैं. सो ऐसे एल्कीन्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स. अगर मैंने एक सिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ लिया, उसके साथ एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अटैक कर रहा है, तो भी रिएक्शन तो एडिशन ही होगा. वाई एडिशन? बिकॉज डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड पर एक ही पॉसिबिलिटी दिखती है, एंड दैट इज एडिशन रिएक्शन. इस एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? सिंस डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है जो लेबाइल है, वेरी प्रोन टू अटैक है, वो ब्रेक होगा. जब वो ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी अगेन डिस्टर्ब होगी. उस एक एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए पहले इसको एक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा. किसी भी एक साइड अभी मैं इलेक्ट्रोफाइल जोड़ देती हूँ और किसी भी दूसरी साइड पर मैं जो अवेलेबल में से सेकेंड साइट है उस पर मैंने Br जोड़ दिया. सो हेयर आई गेट अ एडिशन प्रोडक्ट विच इज ब्रोमो इथेन. अनसेचुरेशन हट गया, डबल बॉन्ड हट गया, एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ Br लगा दिया. नाउ इफ यू रिवर्स द साइड्स, मींस H अगर आप इधर लगा देते हैं, Br इधर लगा देते हैं, देन ऑल्सो यू गेट द सेम प्रोडक्ट. सो इफ वी आर टेकिंग सिमेट्रिकल एल्कीन्स, reacting them with unsymmetrical reagent, only one type of product is formed, and that is alkyl halide, what we are desired to do at present. But in the same reaction, if I am taking a unsymmetrical alkene, here we need to think a lot. ये अब हमने यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है जिसमें अगर आप देखें डबल बॉन्ड के साथ लगे हुए दोनों कार्बन्स आर नॉट सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइड्रोजन काउंट. एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है. तो ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स को अगर हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से जैसे कि HBr से रिएक्ट कराते हैं तो देयर कम्स 2 पॉसिबिलिटीज. व्हाट? जब HBr का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड. ये इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, जो कि यहाँ पर मौजूद है, दैट इज पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव सेंटर है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ जाता है, अटैक करता है, उसके इन्फ्लुएंस में देयर
इज अ चेंज गोइंग टू हैपन, जिसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ये बॉन्ड पूरा का पूरा या इस कार्बन पे शिफ्ट होगा या इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, सो लेट्स सी द टू पॉसिबिलिटीज। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या बताती हैं? एक पॉसिबिलिटी कहती है हमको कि बॉन्ड, लेट मी शो यू हेयर ओनली, this under the influence of this electrophile on this double bond, there are two possibilities. One possibility, ये pi bond पूरा का पूरा इस कार्बन पे शिफ्ट हो, other possibility, ये pi bond पूरा का पूरा इस कार्बन पे शिफ्ट हो। So let's see possibility 2, A and B, दो possibilities हैं। Let's see first possibility, and that is possibility A. According to A, this complete pair should shift here, so it will result in this kind of compound or intermediate rather, and that is this. यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो पेयर इस कार्बन से ले लिया गया और इस कार्बन को दे दिया गया। Now where do this H positive which caused this particular reaction, which caused this particular cleavage, should go or should attach itself? H positive will attach itself to this negative carbon. So to put that, let me erase now this negative sign, because this negative sign will be neutralized by this H which carries positive charge. तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, एंड द रिजल्ट इज अ कार्बोकेटाइन. कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कार्बोकेटाइन. नाउ लेट्स सी पॉसिबिलिटी बी. पॉसिबिलिटी बी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा. सी दिस. According to possibility B, negative charge goes to this carbon and positive charge goes to this carbon. Rest compound as it is. Now hydrogen, which initiated this cleavage, will attaches itself to carbon having negative charge. So let me erase this negative charge now. Why? Because coming proton will neutralize it. So ये वो प्रोटॉन जो अटैक से वापस यहाँ आ जाता है. Here again I got a carbocation. Now let's compare both of the carbocation by choosing two different ways. This carbocation is primary and this carbocation is secondary. We have earlier discussed the same thing, that secondary carbocation is more stable as compared to primary, and further tertiary carbocation is much more stable than these two. So if stability comparison is there, this carbocation is more stable, this is less stable. How can we see that it is primary carbocation? Let's revise that. A carbon having positive charge means carbocation, and this carbon, if it is attached with only one carbon further, that is primary carbocation. Here the carbon carrying positive charge is attached to two carbons, that's why it is called as secondary carbocation. So all in all, secondary carbocation is more stable than primary carbocation, hence this cleavage B is preferred, not A. So this is going to be the more stabler form. This is going to be formed here, and next step is the Br left over here is, जो यहाँ पर Br बचा हुआ था, अब वो Br आके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा. एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. इस कार्बन पर जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज मिला है, इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले यहाँ था, इस पर आके ब्रोमीन अपने आप को अटैच कर लेता है और ये इसका अपना H. सो इसमें अगर हम देखें, बिफोर एंड आफ्टर देखें, क्या कंपाउंड हमने लिया था और हमको क्या कंपाउंड एंड में मिल गया. C डबल बॉन्ड C मौजूद था, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक तरफ हाइड्रोजन गया और एक तरफ ब्रोमीन गया. नाउ लेट्स सी कहाँ पर हाइड्रोजन गया और कहाँ पर ब्रोमीन गया. अगर मैं सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करूं, इंटरमीडिएट ना देखूं, तो एक ही चीज दिखाई देती है मुझको. जहां पर हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा थे, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 2
और इस कार्बन पर हाइड्रोजन सिर्फ एक। तो डबल बॉन्ड वाले जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा थे वहीं पर नया हाइड्रोजन ऐड हुआ, जिस पर हाइड्रोजन का काउंट कम था वहां पर ब्रोमीन ऐड हुआ। तो ये एक फ्रेज हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कि हुआ क्या है यहाँ पर, विच इज easy for us to remember then, rich becomes richer। तो rich becomes richer क्या कहता है? जिसके पास पहले ही पैसे ज्यादा है उसके पास और ज्यादा है। सो उस rich becomes richer जो हमें इंडिकेट करता है वो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि जिस कार्बन के पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्पीशीज यानी हाइड्रोजन ज्यादा है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल भी उसी के पास जाएगा और न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बन के पास जाएगा। सो rich in hydrogen is becoming richer in hydrogen and the one which is with less hydrogen उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऐड होता है। इस पर्टिकुलर रूल, इस पर्टिकुलर सिस्टम को साइंटिस्ट मार्कोनिकोव का नाम दिया गया एंड वी से दैट दिस टाइप ऑफ एडिशन प्रोडक्ट is called as Markovnikov's product. The product formed by following rich becomes richer concept is called as Markovnikov's product, and this is simply the case when we are reacting a alkene with a unsymmetrical reagent. तो unsymmetrical reagent की वजह से हमको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला। So अगर हमने दो alkenes choose की, एक हम symmetrical alkene ले लेते हैं जहाँ पर चारों के चारों हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं डबल बॉन्ड पे, इसको आप HBr देते हैं तो दोनों तरफ से एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देयर इज नो फाइट ओवर हियर, किसी भी एक तरफ हम Br ऐड कर देते हैं, किसी भी एक तरफ हम H ऐड कर देते हैं। बट अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया तो वी हैव टू सी वन थिंग, वी हैव टू मेक श्योर वन थिंग, जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आपने लिया है उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी उसका जो हाइड्रोजन टूट के आएगा वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। ऐसा कहना है मार्कोनिकोव का, या इस पर्टिकुलर तरीके से बना हुआ प्रोडक्ट कहलाता है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो 3 H हो गए इसके पास, पहले 2 थे और एक Br इसके साथ वाले C पे में। सो दिस इज मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म एल्काइल हैलाइड्स व्हेन वी रिएक्ट हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। यहीं पर एक छोटा सा चेंज और हम करके देखते हैं। अगर मैंने यही वाला अनसिमेट्रिकल एल्कीन फिर से लिया और कुछ ऐसा ही दोबारा करवाने की कोशिश करते हैं, जस्ट विद अ स्लाइट चेंज, एंड दैट स्लाइट चेंज इज यूज सेम रिएजेंट HBr बट दिस टाइम along with H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के आते ही इट गेट रिवर्स्ड और अब की बार हमको जो मिलता है प्रोडक्ट वो रिच बिकम्स रिचर की तरह नहीं मिलता, उसके तरीके से नहीं मिलता, वी गेट जस्ट रिवर्स। जहां हाइड्रोजन कम थे वहां पर ऐड हो जाएगा, वहां पर जहां हाइड्रोजन पहले ही कम थे वहां पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी रिच बिकम्स रिचर का जस्ट रिवर्स। सो इसी चीज को देखते हुए इधर मैं यहाँ पर क्या लगा रही हूँ H। वाई? बिकॉज इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम थे, इस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है 2। तो जिस पे हाइड्रोजन कम उस पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है उस पर नेगेटिव पार्ट गिरेगा, जाके जुड़ेगा। सो अगर आप देखें ये जो ऊपर हमने इधर बनाया था ये था हमारे पास मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। अब मार्कोनिकोव प्रोडक्ट के जस्ट बाद में मैंने यहाँ पर आपको क्या बना के दिखाया है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। सो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर रिच बिकम्स रिचर फॉलो होता है, यहाँ उसका जस्ट रिवर्स, एंड ऑल दिस इज डिसाइडेड बाय दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर HBr के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया यू विल ऑलवेज गेट एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, और अगर अकेला HBr ले लिया या यहाँ पर आप HCl भी ले सकते हैं, एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, आप यहाँ पर H2O भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यू कैन चूज, rich becomes richer and you get Markovnikov product. But in this case where you have chosen H2O2, you will get only one product, that is anti-Markovnikov product, where we get reverse. If I want to do same reaction with this set of reagent, HCl plus H2O2,
अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया, आई वोंट गेट एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन HCl के साथ नहीं होगा, किसी और रिएजेंट के साथ नहीं होगा, इट विल बी विद ओनली HBr एंड H2O2 इन कॉम्बिनेशन। H2O2 के साथ हम HCl ले लें, we won't be getting this anti Markovnikov. So anti Markovnikov addition प्रोडक्ट के लिए हमको क्या चाहिए? HBr with H2O2 attacking on डबल बॉन्ड और एनी एल्केन। तो ये एक हमारे पास आया जो हम देख रहे हैं। अब हमने हाइड्रोकार्बन से बहुत सारे तरीके देखे जिससे हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। लेट्स कंसोलिडेट देम। हमने सिंपल एल्केन से भी एल्काइल हैलाइड्स बनाने की कोशिश की, जस्ट लाइक CH3 इथेन से हमने करके देखा। हमने सिंपल एल्कीन से बनाने की कोशिश करी और वो भी हमने बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इन बिटवीन हमने टोल्यूइन से भी हेलोजिनेशन किया, टोल्यूइन का भी हमने रिएक्शन करा के देखा और उससे भी हमको एल्काइल हैलाइड मिल गया। तो यानी एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमने जो भी तीन तरीके अभी देखे विद द हाइड्रोकार्बन, दैट इज going to be very important for us in next reactions. So one last method for the preparation of alkyl halides is now on the roll, and if you see अब तक हमने किसी भी मेथड में ब्रोमीन और क्लोरीन के अलावा कुछ स्पेसिफिकली बना के नहीं देखा है। सो वी आर just running short of the methods by which we can form fluorides और iodides जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किए। अब हमारे पास जो आता है प्रिपरेशन का टारगेट, वो आता है हाउ टू प्रिपेयर दीज फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स। उसके लिए एक मेथड हमारे पास है, इनडायरेक्ट मेथड है। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड बाय विच आई कैन फॉर्म फ्लोराइड और आयोडाइड डायरेक्टली। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इससे पहले हमने जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पढ़े, उनमें से किसी भी मेथड से यू कैन फर्स्ट प्रिपेयर RCl और RBr। आप किसी भी एक मेथड से RCl RBr बना सकते हैं, चाहे अल्कोहल से, चाहे एल्कीन से, एल्केन से, किसी भी एक मेथड से आप एल्काइल हैलाइड अगर बना लेते हैं तो उसके बाद एल्काइल हैलाइड भी स्पेशली क्लोराइड और ब्रोमाइड, उसके बाद इस RX को react with sodium iodide. When we are going to react this sodium iodide with RX, where X is chlorine or bromine, then we see halogen exchange is possible, and that halogen exchange will lead to Ri, that is alkyl iodide exclusively, and then NaX. This alkyl iodide formed is just by substitution by iodide of this halogen X. तो एक तरह से एक हेलोजन ने आके दूसरे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इस मेथड को हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर मेथड इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट फिल्किंस्टीन। सो दिस इज अगेन अ नेम रिएक्शन ऑल्सो, और इस नेम रिएक्शन को इसके नाम से भी पूछा जाता है। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस नेम and this name reaction, that is Wilkinstein reaction. Another way is again choose or form any alkyl halide, either chloride or bromide, and make it to react with heavy metal fluorides like silver fluoride, और इसकी जगह हम कोबाल्ट का फ्लोराइड भी ले सकते हैं, इसकी जगह मर्क्यूरी का फ्लोराइड भी लिया जा सकता है, एंटीमनी का फ्लोराइड भी लिया जा सकता है। इनमें से किसी के भी एक के फ्लोराइड के साथ अगर आप RCl या RBr को रिएक्ट करते हैं, अगेन यू सी दिस हेलोजन एक्सचेंज, एंड दैट इज forming RF, means we are with a method to form fluorides and iodides but by halogen exchange, और इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो ये HEX। इन दोनों मेथड्स में अगर हम देखें तो एक नॉर्मल एल्काइल हैलाइड से हम आयोडाइड और फ्लोराइड बना रहे हैं, बट बाय एक्सचेंजिंग हेलोजन ओनली। दैट्स व्हाई दीज टू मेथड्स कम अंडर हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो ये हमारे पास एक तरह से एक्सचेंज ऑफ हेलोजन की वजह से आए, तो विल से देम हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स, जिसमें पहले वाला था फिल्किंस्टीन और ये दूसरे वाला फ्लोराइड्स वाला जो हमने देखा, दिस इज Schwarz reaction. So these two reactions are
coming under the category halogen exchange reaction. So now let's see all the methods which we have just done over here in this category of alkyl halides preparation. Now just to revise them all, let's do an exercise, a small exercise, and that is just try to complete these reactions alongside. Suppose we are taking an alcohol, any alcohol, and now just be careful about the type we are taking. So we are taking a simple alcohol. If I'm going to react it with SOCl2, what happens? Complete the following reaction. Now referring to the very first method we have discussed, any alcohol regardless of the size or nature, only the size, the carbon length or branching of this particular R group, regardless of its nature, this OH, alcoholic OH, will get substituted by Cl under simple nucleophilic substitution reaction, and I'll get in place of OH substituted, and it is Cl, and the byproducts SO2 and HCl. So the main product will be this, and this is called as simple nucleophilic substitution reaction. So if I'm asked what happens when these two react, I need to refer to the very first method of the preparation of alkyl halide, and here I am with the product. Now suppose we receive another reaction like this. I'm drawing cyclohexene, and this cyclohexene is with CH3, I'm sorry, not CH2, it is CH3. Yeah, it is CH3. इसके साथ if I add HI, what happens to the product? What are the products? So just check, this is an alkene. On alkene we know addition reactions occurs, and this is unsymmetrical reagent, और इस unsymmetrical reagent का positive part है ये. तो हम ये जानते हैं positive will go to that carbon जो कि already hydrogen में rich हो. तो हम उन दो टारगेट करते हैं कार्बन्स को. उन दो कार्बन्स को अगर हम देखें तो ये हैं वो दो कार्बन जो डबली बॉन्डेड हैं. इस कार्बन की 4 वैलेंसी बिना हाइड्रोजन के पूरी हो रही है. जस्ट सी 1, 2, 3 and 4 bonds. But this carbon is having 3 bonds already in place, and there is 1 hydrogen. So if we compare these two carbons, this carbon which I am now indicating with red color, this carbon is rich in hydrogen. It consists of 1 hydrogen, whereas this carbon is having no hydrogen. So this carbon rich in hydrogen will get another hydrogen which becomes richer की वजह से, and what will be the product? Let's see. Now this double bond will break, and in place of this double bond we'll get at 1 carbon, इस पर ये हाइड्रोजन तो पुराना ही लगा हुआ था, और दूसरा हाइड्रोजन जो है कौन सा कहाँ लगेगा? दूसरा हाइड्रोजन भी इसी के पास आके लगेगा जो कि इस रिएजेंट से आया है, और आयोडीन किधर जाके लगेगा? इसके पास लगेगा. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. See before and after, followed by rich becomes richer. So in this way we are supposed to see the questions, and if one more question, if one more reaction we need to complete, for example CH3 CH2 Br, if we react it with NaI, what is product? Or complete the following reaction. This is simply the reaction which we have just discussed in last, and that is Finkelstein reaction. The Finkelstein reaction में क्या था? Iodine will substitute this, and what we get? We get CH3 CH2I, means ethyl iodide. So